from which menu you can insert header and footer. Okay, which option is the right answer? Try kariba. From which menu you can insert header and footer. Header and footer आमे केउ मेन्यू रे पाइबा. ओके, जानते आमे हेडर कोन फुटर कोन. हेडर आमे हेडिंग एंड फुटर, पेज रो एंड रे फुटर एंड पेज रो पूरा आरंभ रे हेडर थाए. केउ मेन्यू हिजबो? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. इंसर्ट मेन्यू हिजबो हेर राइट आंसर. ठीक अछि, इंसर्ट मेन्यू रे आमे पाइबा हेडर एंड फुटर. क्लियर? जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करंतु. क्वेश्चन 2. टू गेट to the symbol dialog box, click on the dash menu and choose symbol. Which option is the right answer? Symbol dialog box को आमे केउ मेन्यू को जाई ओपन करि परिबा. बस एथिरा में ओपन करी सिंबल को चूज करि परिबा. इंसर्ट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, टूल्स बना. ऑप्शन डी हबो. Which option is the right answer? टेबल मेन्यू हबो. Which option is the right answer? इंसर्ट मेन्यू ही हबो हेर राइट आंसर. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 ट्राई करंतु. Dash option from clipboard is used to move data from one place to another in document. Okay, dash option from clipboard is used. Okay, केउ ऑप्शन सहायता रे क्लिपबोर्ड रे जो डाटा अछि सेटा को हम यूज करि परिबा गोटिए माने प्लेस टू आ गोटिए प्लेस को. जेते बेले भी कोनोसी डाटा को सिलेक्ट करबा एंड सिलेक्ट करबा परे ओके हमें कॉपी करबा किंबा कट करबा सेटा केउ थारे स्टोर हुए? क्लिपबोर्ड रे स्टोर हुए. तो एठी हमें कोन कहिछि ना डाटाटा पूरा मूव हबो. एठी डाटाटा कॉपी हबो नै, मूव हबो मींस दैट इज कट एंड पेस्ट इज योर राइट आंसर. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 ट्राई करबा. dash is an option in font group. ट्राई करंतु. निम्नलिखित मध्यरु केउटा गोटिए फॉन्ट ग्रुप रो ऑप्शन अटे? क्वेश्चन 4. ऑप्शन ए स्ट्राइक थ्रू इज द राइट आंसर. स्ट्राइक थ्रू इज हेर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 5. नेम द बटन इन द पिक्चर. ओके, निम्नलिखित मध्यरु केउटा गोटे पिक्चर बटन माने पिक्चर मध्यरु केउ बटनटा पाइबा? फॉन्ट, फिल कलर, पेज कलर होना, हाइलाइटर टूल. हाइलाइटर टूल इज हेर राइट आंसर. ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. हाइलाइटर टूल इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. शॉर्टकट फॉर डॉक्यूमेंट व्यू टूलबार इज सिचुएटेड इन डैश बार. डॉक्यूमेंट व्यू पई ओके केउ शॉर्टकट टूल बार को हमें जो टूल बार को हमें क्लिक करबा दैट इज केउ थारे पाइबा? टास्क बार, स्टेटस बार, टूल बार होना, टाइटल बार. स्टेटस बार ही जो है राइट आंसर. क्लियर? स्टेटस बार इठी हमें पाइबा डॉक्यूमेंट रो दैट इज कोन डॉक्यूमेंट व्यू पई. नेक्स्ट क्वेश्चन 7 ट्राई करंतु. बुलेट्स एंड नंबरिंग इज इन डैश टैब. बुलेट्स एंड नंबरिंग इज इन डैश टैब. केउ टैब रे पाइबा बुलेट एंड नंबरिंग करबा पई हमें होम टैब रे पाइबा. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 ट्राई करंतु. टू ओपन ए एक्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट क्लिक ऑन द डैश एंड देन सिलेक्ट ओपन. इट मींस प्रश्न जदि बुझिबा ऑलरेडी गोटे डॉक्यूमेंट हमें सेव करिसंती. ओके, सेटा पुनी थरा हमें ओपन करिवार अछि. ताहाले हमें केउ ऑप्शन को जे ओपन करि परिबा? निम्नलिखित ऑप्शन मानक मध्यरु एमएस ऑफिस बटन को जे हमें ओपन करि परिबा. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ओके, एमएस ऑफिस बटन हिज हेर राइट आंसर. क्लियर? किंतु नाउ डेज कोन हिच हमरो सबुडा जो अपडेट वर्जन आसी गलानी जेमति माइक्रोसॉफ्ट 365 हिजबो सबुडा एमएस बटन रिप्लेस हो जाई फाइल मेन्यू. ठीक अछि, फाइल मेन्यू को जे भी हमें करि परिबा. नेक्स्ट क्वेश्चन 9 ट्राई करंतु. कट, कॉपी एंड पेस्ट इज इन डैश ग्रुप इन द होम टैब. कट, कॉपी, पेस्ट केउ ग्रुप रे आसीबो? क्वेश्चन 9. व्हिच ऑप्शन इज द राइट आंसर? क्लिपबोर्ड ग्रुप हिज हेर राइट आंसर. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 10. डैश इज यूज्ड टू कन्वर्ट फ्रॉम अपर केस टू लोअर केस एंड वाइस वर्सा. ओके, काहा को हम यूज करंती कन्वर्ट करिया पई कोनोसी भी अपर केस टू लोअर केस किंबा लोअर केस टू अपर केस. टुगुल केस. ओके, टुगुल केस को हम यूज करन जेम हमर होगला कैप्स लॉक. ओके, किंबा शिफ्ट. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. टुगुल केस इज हेर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 11. प्रेसिंग F8 की फॉर 3 टाइम्स सिलेक्ट्स. क्वेश्चन 11. प्रेसिंग F8 की फॉर 3 टाइम्स सिलेक्ट कोन हबो? गोटे सेंटेंस पाइबा. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ओके, किंतु एटा से इंपोर्टेंट नो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12. व्हाट इज द शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू क्रिएट ए कॉपीराइट सिंबल. गोटे कॉपीराइट सिंबल को हमें आनिबा पई केउ शॉर्टकट की यूज करंती? ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी इज द राइट आंसर. ऑप्शन ए हिज हेर राइट आंसर. देन हमें ए सिंबल टी पाइबा एमएस वर्ड. क्वेश्चन 13. व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार. ओके, हमर जो फॉर्मेटिंग टूल बार अछि सेथिरे फॉन्ट साइज टा मिनिमम केते एंड मैक्सिमम केते ट्राई करंतु. मिनिमम होछि केते 8 टू मैक्सिमम 72 पर्यंत. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. 8 एंड 72 हिज हेर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 14. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्राफिक सॉल्यूशन फॉर वर्ड प्रोसेसर. निम्नलिखित मध्यरु केउटा गोटिए ग्राफिक सॉल्यूशन अटे वर्ड प्रोसेसर माने से ऑप्शन को गला में ग्राफिक्स गुडा को पाइबा दैट इज कोन हिजो हमर क्लिप आर्ट. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ओके, क्लिप आर्ट हिजो हेर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 15. द की स्ट्रोक्स कंट्रोल प्लस आई इज यूज्ड टू. कंट्रोल प्लस आई हमें कोथि में यूज करंती? आई मींस व्हाट? इटैलिक करिया पे अप्लाइज इटैलिक फॉर्मेट टू सिलेक्टेड टेक्स्ट. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर.
applies italic format to selected text is your right answer. Next question, question 16 try करूँ. A character that is raised and smaller above the baseline is known as. What a character जहाँकि increase or small माने big or small above the baseline is known as. That is कौन है जो हमारा सेट में कौन कहती? Option C superscript कहती. Option C is the right answer. Next question, question 17 try करूँ. Edger's tool in MS Word is used for कोथि में हम यूज करती? Synonyms and antonyms में. Okay, right click कला से. Option C is the right answer. Next question, question 18. Why drop caps are used in document? Drop caps को कहीं की document रे व्यवहार करा जाए. Okay, try करूँ तो which option is the right answer? Option C is your right answer. To begin a paragraph with a large dropped initial capital letter पे हमें यूज करा. Option C is the right answer. Next question, question 19. A bookmark is an item or location in document that you identify as a name for future reference. Which of the following tasks is accomplished by using bookmark? माने bookmark रो simply जदि बुझिबा प्रश्नटा bookmark रो काम कोन? Try करु which option is the right answer? So very simple. Okay, to quickly jump to specific location in document, option C is the right answer. Clear? जिबा next question, question 20 try करिबा. Which of the following is not valid version of MS Office? Microsoft Office रो कोटा गोटिया valid version नुह. Office Vista, option B is the right answer. Next question, question 21. You cannot close MS Word application by निम्नलिखित क्यों ऑप्शन द्वारा में Microsoft Word को क्लोज करि परिबा नाही? From file menu choose close sub menu, option D is the right answer. Okay, next question 22. The key F12 opens. Okay, the key F12 function 12 कोन करिबो? save as dialog box को ओपन करिबो कि नो? Option A is the right answer. जेमिति हम कंट्रोल एस मारी सेव करते तो सही बॉक्स नहीं ओपन होता. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23. व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द ओपन डायलॉग बॉक्स? ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन करिबा पई केउ शॉर्टकट की को हम व्यवहार करि परिबा? कंट्रोल प्लस F12. ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. लियो बुझियला. क्वेश्चन सेव एज डायलॉग बॉक्स ठीक अछि. ओके, एंड जेतले कंट्रोल प्लस F12 दैट इज कहजो हमरा ओपन डायलॉग बॉक्स. Okay, next question. A feature of MS Word that saves the document automatically after certain interval is available on. केउंठा available पाइबा? That is automatically save हबो. Which option is the right answer? Option A is your right answer. Save tab on options dialog box. Option A is the right answer. Clear? Next question, question 25 try करंतु. Which of the following is not available on the ruler of MS Word screen? निम्नलिखित मध्यरु केउंटा MS Word screen रो ruler रे available रहिबो नाही? Which option is the right answer? Question 25. Center indent, option D is the right answer. Okay, next question, question 26. Which file starts MS Word? केउ फाइल साहाय्य में Microsoft Word को ओपन करि परिबा बा स्टार्ट करि परिबा? winword.exe. ओके, एटा गोटे शॉर्टकट रन कमांड साहाय्य में ओपन करि परिबा. कंट्रोल आर देन winword क्लिक करिया द्वारा एंटर मारिया पर हमरो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन सब ओपन ही परिबो. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 27. If you want to keep track of different edition of a document, which feature will you use? ट्राई करंतु. हमें वर्जन यूज करि परिबा. सेति कोन यूज करि परिबा? ऑप्शन बी वर्जन्स यूज करि परिबा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 28. Background color or effects applied on a document is not visible in print layout view रे सेटा visible हबो नाही. Option B is the right answer. Clear? Sorry, print layout नो print preview हबो. Okay, option B नुहा print preview हियो सेटा. Option D is the right answer. Clear? Next question जिबा question 29. What is a portion of a document in which you set certain page formatting option? Try करन. Question 29. What is a portion of a document in which you set certain page formatting option? केउंठारे? Option C section is the right answer. Option C section is your right answer. Next question, question 30. Borders can be applied to cell, paragraph, text ना all of the above. हमें cell रे भी border दी परिबा, paragraph भी ही परिबा. Option C text भी ही परिबा and option D all of the above is your right answer. Okay, next question, question 31. Which of the following is not a type of page margin? निम्नलिखित मध्यरु केउंटा गोटे page margin नुह? सेंटर ही जो यार ऑप्शन से जाना पड़ जाउची काहे ना एटा सेंटर ही रहइबो. तो पेज मार्जिन केते आसला 32. व्हाट इज द डिफॉल्ट लेफ्ट मार्जिन इन वर्ड 2003? ओके, माने वर्ड रो
2003 वर्जन कथा कहु ओके 710 आई थिंक बिकॉज सबुडार डिफॉल्ट थाए 1.25 ही थाए तो वर्ड 2003 रे ऑप्शन बी ही होगा राइट आंसर ओके 1.25 और हाँ यस 1.25 इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पटेटी एंड लैंडस्केप आर कौन गोटे पेज ओरिएंटेशन हम यहाँ हूँ पटेटी देन यहाँ जो आम चेंज करवा लैंडस्केप ओके मैंने पेज प्रिव्यूटा एमती हम ये पेज प्रिव्यूटा एमती हम यहाँ कौन हो पेज ओरिएंटेशन इज द राइट आंसर क्लियर बुझीगला नेक्स्ट क्वेश्चन 34 ट्राई करवा इफ यू नीड टू चेंज द टाइपफेस ऑफ ए डॉक्यूमेंट व्हिच मेन्यू विल यू चूज ओके जदि आवश्यक पड़ो चेंज करने गोटे डॉक्यूमेंट टाइपफेस को ताहले हमको केउ मेन्यू को जीवाक पड़ो फॉर्मेट मेन्यू को जीवाक पड़ो ठीक है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन 35 ट्राई करंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉन्ट स्टाइल निम्नलिखित मध्य कोटा गोटे फॉन्ट स्टाइल होने बोल्ड हो पारिबो इटालिक हो पारिबो रेगुलर हो पारिबो किंतु सुपरस्क्रिप्ट हबो नै सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन 36 ट्राई करंतु व्हाट हैपेंस व्हेन यू क्लिक ऑन इंसर्ट देन पिक्चर देन क्लिप आर्ट इतने सहज प्रश्न ओके ऑलरेडी जते हम क्लिप आर्ट को जीवा तो कौन हम से वेरी सिंपल टू ओपन्स क्लिप आर्ट टास्क बार ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन 37 व्हिच ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन इंसर्ट टेबल ऑटो फिट बिहेवियर क्यों ऑप्शन सेठार हम अवेलेबल पाइबा नहीं ऑटो फिट टू कॉलम ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑटो फिट टू कॉलम इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन 38 ट्राई करंतु टू ऑटो फिट द विड्थ ऑफ कॉलम that is double click the right border of column जेतला में सही कॉलम रो राइट बॉर्डर को डबल क्लिक करबा दैट इज कोन जो माने एमि जो थाए एटा जेतला में राइट क्लिक करबा बा में डबल क्लिक करिया ऑटो फिट हिजो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन 39 ट्राई करंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स निम्नलिखित मध्यरु केउ स्टेटमेंट फॉल्स भलो भाबरे पढंतु देन ट्राई करंतु फॉल्स ओके ट्रू नो केउटा फॉल्स माने भूल अछि you can set different header footer for even and odd pages ठीक अछि you can set different page number formats for different section ठीक अछि you can set different header footer for first page of a section okay you can set different header and footer for last page of section option D भूल अछि option D is the right answer ठीक अछि सेम ही रहइबो नेक्स्ट क्वेश्चन 40 where you can change the vertical alignment को केउठा हम चेंज करि परिबा ट्राई करंतु क्वेश्चन 40 which option is the right answer page setup dialog box रे option C is the right answer clear next question try करंतु question 41 auto correct was originally designed to replace dash words you type as you type okay जेपरि तुम टाइप करो दैट इज कोन auto correct हुए तो सेटा हमरो रिप्लेस करिया पे dash words माने ग्रामेटिकली कोन थिबो एरर थिबो ना ग्रामेटिकली एरर थिबो ना मिसस्पेल्ड थिबो ग्रामेटिकली एरर थिले तो सेटा हम रिव्यू टाइप दे सॉल्व करबा माने सेटा करेक्ट करबा तो सेटा मिसस्पेल्ड थिबो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन 42 which of the following is the second step in creating a macro माने जेमति हमरो रेकॉर्ड हबो बडे जिंस तो सेमति बुझिबा हम सेटा होची macro then which option is the right answer try करंतु assign a keyboard shortcut to the macro is the right answer option C is here right answer okay next question 43 in word the mailing list is known as सेटा हम कोन कहंती word रे mailing list को data रो source कहंती data source option C is the right answer next question 44 which of the following is not one of the three mail merge helper steps which option is the right answer question 44 निम्नलिखित मध्यरु केउटा हबो नाही set the mailing list parameters is your right answer clear next question 45 which of the following button will allow you to add delete or change records in your data source okay केउ following button टा allow करिवो हम कोन से भी ऐड करि परबा डिलीट करि परबा न रेकॉर्ड रे किछि चेंज आनि परबा data source रे 45 okay option C edit data source button is your right answer next question मिडी प्रश्न आसी जाय पारे it is possible to dash a data source before performing a merge it is possible to what क्रिएट भी करि परबा मॉडिफाई भी होई परबो किमा सेटा हम शॉर्ट भी करि परबा तो ऑल ऑफ द अबव हिज हेयर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन 47 कमेंट्स कैन बी एडेड टू सेल यूजिंग ओके एटा एक्सेल रो क्वेश्चन कमेंट को हम ऐड करि परबा कोन से को सेल रे कोन हम यूज करि परबा शॉर्टकट की हम सही जगह को जाई इंसर्ट को जिबा प्रथम इंसर्ट को जाई सेठी कोन करि परबा कमेंट ऐड करि परबा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट 48 which of the following is not a valid zoom percentage in excel निम्नलिखित मध्यरु केउटा गोटे valid zoom percentage नो एना 400 पर्यंत ही परिबो तो 500 हबो नाही ऑप्शन डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन 49 ट्राई करंतु द स्पेलिंग टूल इज प्लेस्ड ऑन डैश टूलबार ओके मु किछि समय पूर्व कहितली दैट इज हम केउठी पाइबा द स्पेलिंग टूल इज प्लेस्ड ऑन ओके एटा हमें एठी माने क्वेश्चन होची प्लेस करि परिबा ओके स्पेलिंग टूल तो हमें रिव्यू रे पाइबा किंतु प्लेस स्टैंडर्ड टूलबार रे करि परिबा ओके इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज लास्ट क्वेश्चन ट्राई करंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड डाटा टाइप इन एक्सेल निम्नलिखित मध्यरु कोटा गोटिए वैलिड डाटा टाइप नुह एक्सेल रो ऑप्शन बी कैरेक्टर इज द राइट आंसर ओके यो कमेंट्स पुट इन ए सेल आर कॉल्ड
गोटे सेल जो आम कमेंट्स दबा तो सेटा कौन कह स्मार्ट टिप कह सेल टिप कह वेब टिप ना सॉफ्ट टिप व्हिच ऑप्शन इज द राइट आंसर ट्राई करबा कमेंट्स पुट इन ए सेल्स आर कॉल्ड सेल टिप इज द राइट आंसर ओके ऑप्शन बी ही जो यार राइट आंसर क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन 52 ट्राई करबा व्हिच मेन्यू ऑप्शन कैन बी यूज्ड टू स्प्लिट विंडोज इनटू टू प्रश्न को भल भाव बुझिबा देन ट्राई करंतु व्हिच मेन्यू ऑप्शन कैन बी यूज्ड टू स्प्लिट माने दुई भाग करबा ओके गोटे विंडो को दुई भाग करिबारे हमें केउ मेन्यू ऑप्शन को यूज करि परिबा प्रथम होचे हमें व्यू टैब को जिबार अछि ओके व्यू टैब रे विंडो मेन्यू रे स्प्लिट आसीबो क्लियर सो ऑप्शन बी ही जो है राइट आंसर ओके अदरवाइज व्यू स्प्लिट भी हेई परिबो कि तो एठी जेतु विंडो अछि तो विंडो मेन्यू रे ए जो विंडो टूल्स रे आसीबो ओके देन व्यू स्प्लिट विंडो गोटे टूल हे जिवो क्लियर किछ असुविधा नै ओके प्रथम व्यू गले देन विंडो आसिला देन स्प्लिट ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन 53 यू कैन एक्टिवेट सेल बाय इट मींस गोटे करंट सेल अछि बा जे कोनोसी भी गोटे एक्सेल फाइल ओपन होबा परे गोटे सेल एक्टिव केमिति हे परिबो प्रेसिंग द टैब की होबो क्लिकिंग द सेल होबो प्रेसिंग एन एरो की होबो ना ऑल ऑफ द अबव होबो व्हिच ऑप्शन इज द राइट आंसर क्वेश्चन 53 सब उडा को हे परिबो ठीक अछि ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन when you use the file effects in the format data series dialog box you cannot try karantu when you use the file नुह fill effect जते बेले fill effect को व्यवहार करा जाए कोथिरे इन द फॉर्मेट डाटा सीरीज डायलॉग बॉक्स रे सही समय रे कोन करा जाई परिबो नाही you cannot कहि परिबो rotate text on the chart select foreground color select pattern select background color जेतु इफेक्ट दिया जाउची तो ई सबुडा तो हे परिबो ओके सो ऑप्शन ए ही जो है राइट आंसर रोटेट टेक्स्ट ऑन द चार्ट ही परिबो नहीं ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन टू इंसर्ट 3 कॉलम्स बिटवीन कॉलम डी एंड ई ओके यू वुड ताहले कोन करबो एठी होचे हमरो डी कॉलम एटा होचे हमरो ई कॉलम ओके ए बी सी डी ई क्लियर हम जे देखिबा तो एटा होचे कोन हमरो डी कॉलम एटा होचे ई कॉलम तो ए जो डी और ई मध्य रे जदि हमें कॉलम को पुट करिया पे चाहिबा मींस इंसर्ट करिया पे चाहिबा ताहले एठी जदि हमें डी पाखरे इंसर्ट करिबा डी को सिलेक्ट करि जदि हमें इंसर्ट करिबा ताहले डी और ई मध्य आसीबो नहीं ओके डी पूर्व आसीबो दैट्स व्हाई ई को हमको सिलेक्ट करी करबार अछि तो डी और ई मध्य आसीबो ऑप्शन सिलेक्ट कॉलम ई इज द राइट आंसर ओके सिलेक्ट कॉलम ई ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन 56 हाइपरलिंक्स कैन नॉट बी हाइपरलिंक्स कोन हे परिबो नहीं हाइपरलिंक्स मींस कोन गोटे पेज रे जतला गोटे लिंक दबा तो सी लिंक को क्लिक कले कोन हबो ना सी पेज रु आ गोटे सी लिंक थ्रू रे आ गोटे वेबसाइट हो किबा कोनोसी भी गोटे अनदर पेज को हम आसी परिबा ओके बट ये प्रश्न होची हाइपरलिंक्स कैन नॉट बी हाइपरलिंक्स कोन हे परिबो ना हाइपरलिंक्स ओके भलो भाबरे बुझिबा हाइपरलिंक्स रो सिंपली बुझंतु हाइपरलिंक्स होची जदि हम इंसर्ट टैब को जानती तो से हाइपरलिंक्स रे जदि हम क्लिक करबा जहाँ भी टेक्स्ट थिबो सीरीज ऑफ टेक्स्ट गोटे लिंक रे कन्वर्ट हबो इट मींस जेते बेले सही लिंक बा जेते बेले सही टेक्स्ट ऊपर क्लिक करा जिवो ताहा सही पेज रु आ गोटे पेज किबा वेबसाइट एनीथिंग हे परिबो तो ये प्रश्न होची हाइपरलिंक्स कैन नॉट बी special shapes like stars and banner हे परिबो की drawing object like rectangles ovals pictures all can be hyperlinks it means I think option all can be hyperlinks no ए सबुडा तो हे परिबोनी तो सही अनुसार ऑप्शन डी ही जो राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन you can add an image to a template by clicking the insert picture from the file button on the dash toolbar standard formatting drawing ना picture बहुत इजी जेतला हम पिक्चर को इंसर्ट करबा मींस इमेज को इंसर्ट करबा तो सेटा क्यों टूल बार हिजो पिक्चर टूल बार हिजो गेटिंग माय पॉइंट ऑप्शन डी इज द राइट आंसर इमेज आसियो मींस हमरा पिक्चर टूल बार रे 58 टू ड्रैग ए सिलेक्टेड रेंज ऑफ डाटा टू अनदर वर्कशीट इन द सेम वर्कबुक यूज द कहि पर टैब की ऑल्ट की शिफ्ट की ना कंट्रोल की व्हिच ऑप्शन इज द राइट आंसर ड्रैग करबा माने कोन सही समय कंट्रोल को प्रेस करिया में ड्रैग करि परिबा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ओके कंट्रोल की हिजो है राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन when you print preview a worksheet then option ache the entire worksheet is displayed the selected range is displayed the active portion of the worksheet is displayed na a b c सबुडा hi परिबो ओके बहुत सहज क्वेश्चन ट्राई करंतु सबुडा hi परिबो ना एटा भी परिबो सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन 60 you can open the short dialog box by choosing short from the dash menu view format tools na none of the above होबो एटा हम डेटा मेनू रे पाइबा तो none of the above is the right answer ओके एटा क्यों मेनू रे पाइबा डेटा मेनू रे पाइबा माने रखंतु व्यू फॉर्मेट की टूल्स बनै की एटा डेटा मेनू रे पाइबा नेक्स्ट क्वेश्चन when working in the page break preview you can कोन करि परिबो पेज ब्रेक प्रीव्यू साहाय्य रे
view exactly where each page break occurs हे परिबो ओके हम देखि परिबा प्रत्येक पेज को add or remove page breaks हे परिबो change the print area भी करि परिबा so all of the above is the right answer okay question 61 option D is the right answer next question which of the following is not a valid zoom percentage in excel microsoft excel रे निम्नलिखित मध्यरु केउटा गटिया valid zoom percentage no maximum तो 400 तो 500 हबो नाही next question the spelling tool is placed on dash toolbar okay I think इटा में previous class रे मथे discussion करिथिले place करा जिवो that is हमर कोन हिजो standard okay ऑप्शन ए स्टैंडर्ड इटा में रिव्यू रे पाइबा किंतु स्टैंडर्ड रे में प्लेस करि परिबा फॉर्मेटिंग ए सेल इन करेंसी यू कैन स्पेसिफाई करेंसी सिंबल बहुत सहज ओके ऑप्शन ए इज द राइट आंसर सॉरी ऑप्शन करेंसी करेंसी को जगह फॉर्मेटिंग ए सेल इन करेंसी यू कैन स्पेसिफाई करेंसी सिंबल डेसिमल सिंबल भी अछि तो डेसिमल भी होई परिबो ओके तो सेही अनुसार जदि हम देखिबा ताहाले both of the above ही option C okay decimal place रे भी ही currency symbol रे भी formatting a cell in currency you can specify decimal place and currency symbol both is the right answer clear बुझियला जिबा next question what is entered by the function equal to today bracket okay what is entered by the function equal to today bracket which option is the right answer जेतला में ई function टी apply करबा कम पाइबा try करंतु कम पाइबा डेट वैल्यू फॉर द डे अकॉर्डिंग टू द सिस्टम क्लॉक इट मींस सिस्टम मींस कोन निज कंप्यूटर रो टाइम अनुसार ओके टाइम एंड डेट पाइबा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन 66 व्हिच फंक्शन विल यू यूज टू एंटर करंट टाइम इन ए वर्कशीट सेल ओके करंट टाइम केते हिची नाउ फंक्शन यूज करबा इक्वल नाउ देन ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करले ओके करंट टाइम हमको मिली परिबो नेक्स्ट क्वेश्चन मर्ज सेल्स ऑप्शन कैन बी अप्लाइड फ्रॉम मर्ज सेल्स ऑप्शन को अप्लाई करा जाई परिबो व्हिच ऑप्शन इज द राइट आंसर 67 Format cells dialog box alignment tab is the right answer. Option A is the right answer. Next question. Which of the following format you can decide to apply or not in auto format dialog box? Means which of the following format माने निम्नलिखित मध्यरु को फॉर्मेट को तुमे डिसाइड करि परिबो जे अप्लाई करिया पई और नॉट इन ऑटो फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स रे क्वेश्चन 68 ओके सब उडा कहि परिबो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ कैन यू रिमूव बॉर्डर्स अप्लाइड इन ए सेल जेतले गोटे सेल रे बॉर्डर दिया जायछि तो सेटू केमिति हमें रिमूव करि परिबा केमिति रिमूव करि परिबा चूज नॉन ऑन बॉर्डर टैब ऑफ फॉर्मेट सेल हे परिबो ओपन द लिस्ट ऑन बॉर्डर टूल ओके बॉर्डर टूल को ओपन करा जाऊ इन फॉर्मेटिंग टूल बार देन चूज फर्स्ट टूल नो बॉर्डर इटा भी परिबो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर बोथ ओके ऑप्शन ए एंड बी इज द राइट आंसर यू कैन चेक द कंडीशंस अगेंस्ट डैश व्हेन अप्लाइंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमें कोन चेक करि परिबा you can check condition against cell value भी चेक करि परिबा फार्मूला भी चेक करि परिबा ठीक अछि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन ए रेंज इज सिलेक्टेड हाउ कैन यू एक्टिव द प्रीवियस सेल ऑलरेडी गोटे रेंज को सिलेक्ट करा जायछि तो जेतेले प्रीवियस सेल को एक्टिव करिया पे कड़े एक्टिव करिया पे पड़िबो ताहले हम केमिति करिबा व्हेन ए रेंज इज सिलेक्टेड हाउ कैन यू एक्टिव द प्रीवियस सेल प्रेस ऑल्ट की हे परिबोनी प्रेस टैब भी हे परिबोनी एंटर भी हे परिबोनी ओके नॉन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर नॉन ऑफ द अबव हिजो मींस ऑलरेडी जेतेले गोटे रेंज सिलेक्ट अछि हाउ कैन यू एक्टिव द प्रीवियस सेल तो प्रथम से रेंज को डिसिलेक्ट कले ही हम प्रीवियस सेल को एक्टिव करि परिबा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ईच एक्सेल फाइल इज ए वर्कबुक दैट कंटेन्स डिफरेंट शीट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए शीट इन वर्कबुक ओके वर्कशीट तो ही परिबो गोटे चार्ट शीट भी ही परिबो मॉड्यूल शीट भी गोटे वर्कबुक किंतु डेटा शीट हबो नाही ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ओके डेटा शीट गोटे एक्सेल शीट ही परिबो नाही क्लियर बुझियला नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following excel screen components cannot be turned on or off okay it means निम्नलिखित मध्यरु केउ excel screen component को on or off करि परिबा नाही फार्मूला बार स्टेटस बार टूल बार on off okay एमित तो किछि नुह तो none of the above is the right answer next question 75 which of the following option is not available in paste special dialog box पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स रे हमें क्यों ऑप्शन को पाइबा नहीं एडिशन सब्सट्रैक्शन पाइबा डिवाइड पाइबा स्क्वायर रूट पाइबा नहीं ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द सेल पॉइंटर इंडिकेट्स दैट यू कैन फिल सीरीज निम्नलिखित मध्यरु क्यों सेल पॉइंटर इंडिकेट करूची जे सेथिरे हमें सीरीज माने गोटे सीरीज को फिल करि परिबा माउस पॉइंटर विथ एंकर एट द टिप ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस ओके जेतेले भी एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस आसी गोटे डॉलर सिंबल रहबो तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ठीक अछि डॉलर ए डॉलर 1 एटा होछि हमर एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस परीक्षा आसी जाय पारे नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच सिंबल मस्ट
ऑल फार्मूला बिगिन विथ क्यों सिंबल पर माने अधिकांश फार्मूला कौन हुए आरंभ हुए इक्वल टू ठीक है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज नॉट एंटर्ड करेक्टली निम्नलिखित मध्यरु कोटा गोटिए करेक्ट नुह क्यों फार्मूलाटा सबुडा तो ठीक अछि कि एटा ही नाही ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूलास विल एक्सेल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट निम्नलिखित मध्यरु को फार्मूलाटी एक्सेल रे कैलकुलेट हे परिबा नाही ऑप्शन ए हिज राइट आंसर ठीक अछि सम एटा ही परिबा नै सबुडा हे परिबा ऑप्शन इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन ए वर्कशीट रेंज इज ए कोन हे परिबा गोटे वर्कशीट रेंज गोटे कोन हे परिबा ए ग्रुप ऑफ सेल्स हे परिबा ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन द ऑटो कैलकुलेट फ्यूचर कोन हे परिबा द ऑटो कैलकुलेट फ्यूचर गोटे कोन provides a quickly way to view the result of an arithmetic operation on a range of cells. Option B is the right answer. Next question. Excel uniquely identifies cell within a worksheet with a cell name. Okay, that is कौन हमारा column और row रहुची. Okay, column जो सही जो column और row रहुची column रे letters rows रे number. Okay, option C is the right answer. Next question. To drag a selected range of data to another worksheet in the same workbook use the okay এটা I think practice very सही control की मुझे कही थी समय रे कंट्रोल की ही हो यार राइट आंसर रिपीट अछि आई थिंक हाइपरलिंक्स कैन बी अच्छा पुनी तरह आसला सेतले कैन नॉट बी हितला एथरे कैन बी माने हे परिबो हाइपरलिंक्स कैन बी सब गुडा को हे परिबो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर ओके हाइपरलिंक्स कैन बी टेक्स्ट हे परिबो ड्राइंग हे परिबो पिक्चर भी हे परिबो माने से लिंक को क्लिक कले अच्छा तो हमर प्रीवियस क्वेश्चन कोन थिला प्रथम क्वेश्चन के देखि दबा डाउट अछि हाइपरलिंक्स कैन नॉट बी ओके ठीक अछि 8 थिले 86 टू एक्टिव द प्रीवियस सेल इन ए प्री सिलेक्टेड रेंज प्रेस टू एक्टिव द प्रीवियस सेल इन ए प्री सिलेक्टेड रेंज इट मींस क्वेश्चन होजे गोटे सेल को प्रीवियस सेल को एक्टिव करबा इन ए प्री सिलेक्टेड रेंज रे माने पूर्वरु गोटे सिलेक्टेड रेंज गोटे रेंज सिलेक्ट ठीक अछि ताहले कोन हिजिबो नन ऑफ द अबव हिजो सेतले हम कहितली ऑल्ट की होबने टैब की एंटर की होबने एटा डिसिलेक्ट करके हम रीसिलेक्ट करि पाइबा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर Which button do you click to add up a series of numbers? क्यों बटन साइज रे में series of numbers को ऐड करि पाइबा रिपीट अछि आई थिंक क्वेश्चन बहुत गुडा को टू ऑटो सम बटन हिजो हेरो राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन द फार्मूला बार इज एक्टिव यू कैन सी जेतले फार्मूला बार टा एक्टिव हो जेतले हम कोन देखि परिबा सब गुडा देखि परिबो एडिट फार्मूला बटन कैंसिल बटन एंटर बटन सब गुडा हे परिबो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इन ए वर्कशीट यू कैन सिलेक्ट कोन हे परिबो in a worksheet you can select entire worksheet भी select करि परिबा row column all of the above हिजो राइट आंसर सब गुडा हम चाहिले select करि परिबा क्लियर ओके कंट्रोल ए साइज रे हम select करि परिबा नेक्स्ट क्वेश्चन which are in an excel window allow entering values and formula which area so यार नो which area in excel window रो क्यों एरिया रे हमें कोनोसी भी वैल्यू और फार्मूला को एंटर करि परिबा दैट इज हमर कोन फार्मूला बार हिजो राइट आंसर Option C is the right answer. Next question. To edit an embedded Excel worksheet object in a Word document. Okay. गोटे Word document भितर edit करिवार अछि सेटा हमें already embedded ही अछि थाले हमें कोन करि परिबा embedded माने गोटे Word document open करिबा तो open करिबा पर से Word document रे गोटे Excel sheet पाइबा. Okay, that is embedded Excel sheet. तो सेटा edit करिबा हमें कोन करि परिबा use the Excel menu bar and toolbar inside the Word application. Okay, Word application मध्ये थिबा Excel menu bar and toolbar को use करि परिबा. Next question. To create a formula you can use try करंतु गोटे formula create करिया हमें कोन करि परिबा value and cell reference दरकार ठीक है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन status indicators are located on the status of indicator जहां भी हमें टाइप करिया सेटा फार्मूला बार शो करिवो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 94 an excel workbook is a collection of मन रखंतु एटा परीक्षा रे बारंबार आसे जहां कि गोटे कलेक्शन ऑफ कोन हे परिवो वर्कशीट भी परिवो एंड सेते चार्ट्स भी पाइबा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर वर्कशीट एंड चार्ट इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन Excel files have a default extension of जेतला में एक्सटेंशन माने कोन जेतला गोटे Excel फाइल को हम सेव करिया तो सही समय रे डॉट गोटे आस्तो सेटा होय कोन डॉट xlxs आई थिंक एमिति और sx ओके xlsx ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन except for the dash function a formula with a logical function shows the word true or false as a result ओके क्यों फार्मूला को छाडी दबा परे सेटा होय कोन हमर गोटे if फार्मूला आई थिंक if ओके if फार्मूला परे सब गुडा को ट्रू एंड फॉल्स रे हम ओके आनी परिबा नेक्स्ट क्वेश्चन macros are run or exhausted from the dash menu क्यों मेनू रे पाइबा macro माने गोटे recorded form जहां भी हमें माने किछि भी गोटे फार्मूला बनेबा हो किछि वर्कशीट बनेबा सेटा गोटे macro रे हमें रिकॉर्ड करि परिबा टूल्स रे पाइबा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर
क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन ओपन द consolidated dialog box byt okay by choosing consolidate from the dash menu क्यों मेनू डेटा मेन्यू जो है राइट आंसर डेटा मेन्यू हमें पाइबा नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ आर डाटा ऑर्गेनाइज्ड इन ए स्प्रेडशीट रे डाटा हमर रोज एंड कॉलम्स रे ऑर्गेनाइज होई कि थाए ठीक अछि रोज एंड कॉलम्स एही रोज एंड कॉलम्स रो ओके इंटरसेक्शन रे गोटे सेल फॉर्मेशन हुए ओके दैट इज द यूनिट कहि परिबा गोटे वर्कशीट रो गोटे एक्सेल रो another function is called a dash function ट्राई करबा क्यों ऑप्शन टी जो है राइट आंसर गोटे फंक्शन मध्य रे आउ गोटे फंक्शन रहिबो सेही जो प्रोसेस बा सेटा को हमें कोन कहबा क्यों फंक्शन कहबा ऑप्शन ए ही जो है राइट आंसर नेस्टेड फंक्शन कहबा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रो क्वेश्चन क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन 102 क्वेश्चन व्हिच फंक्शन कैलकुलेट्स योर मंथली मॉर्गेज पेमेंट सिंपली प्रश्नटी हूँ निजर जो गोटे मंथली पेमेंट सैलरी हो जहाँ भी हो गोटे मंथली पेमेंट हाउस रेंट हो तो सेटा को कैलकुलेट करबा आम क्यों फंक्शन को व्यवहार करबा PMT फंक्शन दैट इज पेमेंट्स फंक्शन को हमें यूज करि परिबा नेक्स्ट क्वेश्चन टू ड्रैग ए सिलेक्टेड रेंज ऑफ डाटा टू अनदर वर्कशीट इन द सेम वर्कबुक यूज द गोटे वर्कबुक रे हमें डिफरेंट वर्कशीट को हमें क्रिएट करि परिबा ओके मोर देन वर्कशीट हमें क्रिएट करि परिबा तो सही समय रे गोटे सिलेक्टेड डाटा को जेतला हमें ड्रैग करबा तो सही समय रे हमें क्यों की यूज करबा कंट्रोल की यूज करबा ऑप्शन डी हे जो है राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन द फार्मूला बार इज एक्टिवेटेड यू कैन सी जेतले फार्मूला बार एक्टिव अछि तो सही समय रे हमें कोन देखि परिबा टू एडिट फार्मूला बटन हे परिबो टू कैंसिल बटन एंटर बटन भी हे परिबो मींस ऑल ऑफ द अबव हे जो है राइट आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच फाइल फॉर्मेट कैन बी एडेड टू ए पावर पॉइंट शो गोटे पावर पॉइंट शो रे हमें केउ केउ प्रकार फाइल सब एडिट मींस कैन बी एडेड माने ऐड करि परिबा इंसर्ट करि परिबा सही सेंस रे माने सही जो पावर पॉइंट रो स्लाइड मध्ये आनि परिबा ओके सबुडा हो यार राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव हे जो है राइट आंसर इमेज फाइल भी आसीबो ऑडियो फाइल भी आसीबो वीडियो फाइल भी आसीबो किबा कोनोसी भी माने गिफ फाइल भी आसीबो सब प्रकार पीएनजी फाइल हे परिबो जेपीजी फाइल हे परिबो सब उडा आनि परिबो नेक्स्ट क्वेश्चन मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर इज बेस्ट प्रेजेंटेड बाय माने किछि टेक्स्ट अछि एंड किछि नंबर अछि ओके तो ये जो ऑप्शन मध्यरु ओ प्रोसेस रे हमें बेस्ट प्रेजेंट करि परिबा ऑप्शन ए ही जो है राइट आंसर ए टेबल स्लाइड रे हमें पूरा भलो भाबरे याको प्रेजेंट करि परिबा ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन इन ऑर्डर टू एडिट ए चार्ट यू कैन गोटे चार्ट को एडिट करिया पे हमें कोन करि परिबा ये जो चारोटी ऑप्शन को पढ़िबा देन व्हिच ऑप्शन टी हमर एप्रोप्रिएट हो ट्राई करिबा गोटे चार्ट को जतला हम एडिट करिबा ताले सी चार्ट ऊपर डबल क्लिक करिया अछि ओके कोन करिया अछि डबल क्लिक द चार्ट ऑब्जेक्ट जो है राइट आंसर ओके देन हमें फॉर्मेट मेनू रे एडिट करि परिबा टू एग्जिट द पावर पॉइंट जतले गोटे पावर पॉइंट रू एग्जिट करिया पई हमको कोन करिवार अछि चारोटी ऑप्शन रू व्हिच ऑप्शन इज द राइट आंसर ट्राई करंतु डबल क्लिक द एप्लीकेशन कंट्रोल मेन्यू आइकन हे जो है राइट आंसर ओके डबल क्लिक द एप्लीकेशन कंट्रोल मेन्यू को जाई आइकन रे क्लिक करिया हम एग्जिट करि परिबा नेक्स्ट क्वेश्चन टू सिलेक्ट वन हाइपरलिंक आफ्टर another during a slide presentation what do you press to select one hyperlink okay गोटे hyperlink को सिलेक्ट करबा और another clear during the slide presentation slide को presentation समय रे तो सही जो माने हमें what do you press ताला हमें क्यों कीटा प्रेस करबा tab की हमें प्रेस करबा ऑप्शन ए ही जो है राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन स्पेशल इफेक्ट्स यूज्ड टू इंट्रोड्यूस स्लाइड इन ए प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड कौन सी गोटे स्लाइड रे जते हमें स्पेशल इफेक्ट दियंती तो सेटा को हमें कोन कहंती सेटा को हमें कोन कहंती व्हिच ऑप्शन इज द राइट आंसर ट्रांजिशंस कहंती ऑप्शन सी ही जो है राइट आंसर ओके ट्रांजिशन ऑप्शन कहंती व्हाट इज द टर्म यूज्ड व्हेन यू प्रेस एंड होल्ड द लेफ्ट माउस की एंड मोर द माउस अराउंड द स्लाइड ताले सी जो टर्म ता कोन हे परिबो तले हमें गोटे माउस रो प्रेस करबा एंड होल्ड करी रखिबा दैट इज लेफ्ट माउस की को ताले सी स्लाइड अराउंड सेटा कोन कहजिबो ड्रैगिंग कहजिबो कोन कहजिबो ऑप्शन बी ड्रैगिंग इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन 112 टू गिव ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन टू ए लार्ज ऑडियंस यू ओके बहुत गुड़िए दर्शक अछंती गोटे बड़ माने परिमाणर लोकन को तो सेदार जतरा हमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करबा तो सही समय हमें कोन करि परिबा चूज एइदर व्यू और स्लाइड शो व्यू साहाଯ୍य हमें माने बड़ स्क्रीन रे देखै परिबा ऑप्शन सी ही जो है राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 113 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू यूज टू ऐड आइटम्स टू द स्लाइड इन ए presentation try करंतु which option is the right answer which of the following can you use to add items not times to the slides in a presentation गोटे प्रेजेंटेशन रे टाइम को ऐड करिया पय हमें कोन करि परिबा रिहर्स टाइमिंग बटन को जे हमें
यूज करि परिबा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द पावर पॉइंट्स व्यू निम्नलिखित मध्यरु केउटा गोटे पावर पॉइंट व्यू नुह 14 व्हिच ऑप्शन इज द राइट आंसर प्रेजेंटेशन व्यू हिज यार राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच पावर पॉइंट व्यू वर्क्स बेस्ट फॉर एडिंग स्लाइड ट्रांजिशंस निम्नलिखित मध्यरु केउ व्यू रे हमें स्लाइड रो जो ट्रांजिशन गुडा को ऐड करिया पे हम पे कन्वीनियंट हो माने सुविधाजनक अटे दैट इज व्हिच ऑप्शन इज द राइट आंसर स्लाइड शटर व्यू हिज यार राइट आंसर ओके ये व्यू रे ही पाइब नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग व्यू इज द बेस्ट व्यू टू यूज व्हेन सेटिंग ट्रांजिशन इफेक्ट फॉर ऑल स्लाइड इन ए प्रेजेंटेशन ट्राई करंतु व्हिच ऑप्शन इज द राइट आंसर मींस निम्नलिखित मध्यरु केउ ऑप्शन सहाय्य रे माने आम पे सेटा बेस्ट व्यू हबो बा जहां भी काम करिया पे कन्वीनियंट हबो ऑलरेडी सेटिंग ट्रांजिशन गुडा को इफेक्ट फॉर ऑल माने गोटिए थरे सब गुडा को दबा पे तो सेटा कोन हिजो स्लाइड शटर व्यू ही हबो राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑप्शन कैन बी यूज्ड टू सेट कस्टम टाइमिंग्स और स्लाइड इन ए प्रेजेंटेशन कस्टम टाइमिंग गोटे होची ऑटोमेटिक आउट होची कस्टम माने डिफरेंट स्लाइड को हमें डिफरेंट टाइमिंग दे परिबा यानी केउ ऑप्शन टी हिजो यार राइट आंसर से रिहर्सल को जही हमें करि परिबा ओके रिहर्सल इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following will not advance to slides in a slideshow view okay it means केउ की को हमें प्रेस करबा तो सेटा को हबनी गोटे स्लाइड शो व्यू रे रहबो नै दैट इज एस्केप की ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द क्विकेस्ट वे टू क्रिएट ए पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन इज टू यूज गोटे शीघ्र गोटे पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन को क्रिएट करिया पय हम कोन करि परबा ऑटो कंटेंट विजार्ड हम यूज करि परबा ऑप्शन सी द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following can you format using buttons on the formatting toolbar which of the following can you format using buttons on the formatting toolbar underline आमे formatting toolbar को जाई underline आमे कोन करि परिबा देई परिबा ओके ऑप्शन मध्य नेक्स्ट क्वेश्चन टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट एप्लीकेशन ओके माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट एप्लीकेशन को आमे केमिति ओपन करि परिबा कमेंट सेक्शन रे कमेंट करि जणांत ओके व्हिच ऑप्शन इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन which menu provides you option like animation scheme custom animation slide transition okay क्यों ऑप्शन रे पाइबा insert format toolbar ना स्लाइड शो मेन्यू रे पाइबा ऑलरेडी जेतला हम स्लाइड शो मेन्यू जिबा सब गुडा पाइ जिबा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बुझियला 122 सिंपल क्वेश्चन किछि नै एथिरे ओके बिकॉज़ बेसिक कंप्यूटर नॉलेज ही दरकार सब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्लियर जो नेक्स्ट क्वेश्चन 123 इन व्हिच मेन्यू कैन यू फाइंड फीचर लाइक स्लाइड डिजाइन स्लाइड लेआउट ईटीसी स्लाइड डिजाइन हो किबा स्लाइड लेआउट हो इस गुडा हम क्यों मेन्यू रे पाइबा क्यों मेन्यू रे पाइबा गोटे स्लाइड को डिजाइन करबा स्लाइड रो लेआउट हम फॉर्मेट मेन्यू रे पाइबा ऑप्शन बी ही जो है राइट आंसर ओके जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन द सिलेक्टेड डिजाइन टेम्पलेट कैन बी अप्लाइड ओके से जो गोटे सिलेक्टेड डिजाइन टेम्पलेट को आमे कोथरे अप्लाई करि परिबा करंट स्लाइड रे भी परिबो टू ऑल स्लाइड भी परिबो टू ऑल न्यू प्रेजेंटेशन यू क्रिएट ओके न्यू क्रिएट स्लाइड भी परिबो मींस ऑल ऑफ द अबव हो यार राइट आंसर जे कोनोसी भी गोटे डिजाइन टेम्पलेट को हमें एग्जिस्टेड हो किबा न्यू हो स्लाइड रे ही हम अप्लाई करि परिबा प्रेजेंटेशन पे नेक्स्ट क्वेश्चन What feature will you use to apply motion effect in between a slide exist and another enters? गोटे मोशन इफेक्ट को आमे यूज करिया पई क्यों फ्यूचर पाकू आमे जाई परिबा स्लाइड ट्रांजिशन पाकू जाई परिबा मींस गोटे एग्जिस्ट हवा समय गोटे कोन एंटर हबो स्लाइड ट्रांजिशन रे सेटा पाइबा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट पावरपॉइंट फ्यूचर will you use to apply motion effects to different objects of a slide? ओके एटा भी बहुत सहज इस स्लाइड डिजाइन को गले एटा में पाइ जिबा ऑप्शन बी ही जो है राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन which command will you use in PowerPoint if you need to change the color or different object without changing content okay क्यों command साहाय्य में करि परिबा without changing content को नै कि color scheme साहाय्य में करि परिबा ऑप्शन बी ही जो है राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन which shortcut key inserts a new slide in current presentation okay कंट्रोल एम मारले कोन हबो गोटे न्यू स्लाइड आसी जिवो ओके हम स्लाइड को क्रिएट करि परिबा गोटे न्यू स्लाइड क्रिएट करि परिबा नेक्स्ट क्वेश्चन टू स्टार्ट स्लाइड शो ऑफ ए प्रेजेंटेशन ओके गोटे प्रेजेंटेशन रो स्लाइड शो को हमें केमिति स्टार्ट करि परिबा एटा मध्ये कमेंट सेक्शन रे कमेंट करि जणांत क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन मींस कोन एटा वेरी सिंपल F5 तो ही परिबो हम स्लाइड शो मेन्यू को जाई कि व्यू ऑप्शन रे भी करि परिबा किबा रिहर्स टाइमिंग करि परिबा बोथ एंड बी जो है राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इफ यू सिलेक्ट इंसर्ट देन पिक्चर देन फ्रॉम फाइल कोन हबो इंसर्ट टैब को गले जेतरे पिक्चर मेन्यू रे तापर फ्रॉम फाइल को जिबा यू कैन इंसर्ट पिक्चर ओनली सेतरे केवल पिक्चर को ही हमें आनी परिबा नेक्स्ट क्वेश्चन Which of the following font effect is not available in PowerPoint font dialog box? निम्नलिखित मध्यरु केउ font effect पाइबा नै PowerPoint font dialog box रे स्ट्राइक थ्रो पाइबा नहीं ओके एटा कोन थे अलगा थाए क्लियर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन टू इंसर्ट ए हाइपरलिंक इन ए स्लाइड चूज इंसर्ट को जाई इंसर्ट टैब जे हाइपरलिंक भी क्लिक करि परिबा अदरवाइज प्रेस कंट्रोल के शॉर्टकट की साइज रे मध्य करि परिबा बोथ एंड बी जो है राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इन ए PowerPoint प्रेजेंटेशन कोन hi परिबो साउंड एंड मूवी ऑप्शन बी बोथ कैन बी इंसर्टेड
साउंड क्लिप एंड मूवी क्लिप को मध्य हमें दे परिबा क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन टू इंसर्ट स्लाइड नंबर्स गोटे पावर पॉइंट रे स्लाइड नंबर इंसर्ट करबा पई माने स्लाइड रे नंबर दवा पई हम कोन करबा दरकार 134 कोन हे परिबो insert a new text box and select insert slide number is your right answer next question what are the three options available in insert picture menu रे जेतला हम insert को जिबा देन picture menu रे क्लिक करबा ताले केउ तीनोटी ऑप्शन अवेलेबल हबो क्लिप आर्ट आसीबो फ्रॉम फाइल्स रो आसी परिबो किबा ऑटो सेव्स मध्ये पाइबा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम व्हिच मेन्यू यू कैन एक्सेस पिक्चर टेक्स्ट बॉक्स एंड चार्ट इटीसी इत्यादि insert menu रे ही तो पाइबा सब गुडा ठीक अछि ऑप्शन C is the right answer. Insert menu is your right answer. Next question. Which of the following is not a part of slide design? निम्नलिखित मध्यरु कोटा गोटे slide design रो part नुह. Slide layout टा गोटे slide design रो part नुह. Option D is the right answer. Next question. What is the term used when a clip art image changes the direction of face? So जेतले हमें यार direction को change करबा कोन करै छु सेटा rotate करबा. Option C is the right answer. Next question. The slide that is used to introduce a topic and set the tone for the presentation is called that is कौन कहजिबो गोटे टॉपिक इंट्रोड्यूस करिया पे हम सेते टाइटल दिहंती कि नुआ ऑप्शन डी इज द राइट आंसर टाइटल स्लाइड ही जो है राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन 140 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स शुड यू यूज व्हेन टाइपिंग इन द नोट्स टेक्स्ट बॉक्स ओके हम केउ फ्यूचर को व्यवहार करंती जेतेले किछि नोट्स आकार रे बनवा पई चाहंती ऑप्शन डी ही जो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स शुड यू यूज व्हेन टाइपिंग in the notes text box slide so insert अच्छा zoom करी भी हम सेते टाइप करी परिबा ऑप्शन डी ही हबो यार राइट आंसर क्लियर ऑप्शन अनुसार नेक्स्ट क्वेश्चन which command brings you to the first slide in your presentation एमिति सब स्लाइड उडा अछि ओके लेट्स से कि हमें 4 नंबर स्लाइड रे अछंती तो हमको 1 नंबर स्लाइड को जे पे केउ शॉर्टकट की हम यूज करि परिबा कंट्रोल प्लस हम यूज करि परिबा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन you can show the shortcut menu during the slide show by you can show the माने देखि परिबा शॉर्टकट गोटे मेन्यू टा during the slide show by ता द्वारा सेटा राइट क्लिक द करेंट स्लाइड रे जो करेंट स्लाइड रे राइट क्लिक कले हम देखि परिबा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑटो क्लिप आर्ट इज ए फ्यूचर दैट ऑटो क्लिप आर्ट गोटे फ्यूचर जहा कि ऑटो क्लिप आर्ट ओके ऑटो क्लिप आर्ट गोटे फ्यूचर जहा कि कोन करि परिबो स्कैन योर प्रेजेंटेशन ओके इनकरेक्ट स्पेलिंग इन योर वर्ड्स ऑन ईच स्लाइड हेबो यार राइट आंसर ऑप्शन बी ही जो है राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द व्यू दैट डिस्प्लेस द स्लाइड्स ऑन ए प्रेजेंटेशन एज miniature representations of the slide is called एटा हमें क्यों व्यू कहबा स्लाइड शटर व्यू माने सब जा स्लाइड कोन हबो मिनिमाइज है कि पूरा गोटे फाइल रे हमको जहां भी स्लाइड अछि माने गोटे थाई लिमिट से लिमिट अनुसार देखा जाय ऑप्शन बी स्लाइड शटर व्यू इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स ए प्रिंटेड कॉपी ऑफ योर प्रेजेंटेशन निम्नलिखित मध्यरु केउटा गोटे प्रिंटेड कॉपी भाबरे प्रेजेंटेशन रो प्रिंटेड कॉपी भाबरे प्रोवाइड करे 145 audience handouts is the right answer next question when using PowerPoint to play a PowerPoint show for previewing the show select view को जाई कि स्लाइड शो रे जतला हम क्लिक करबा ताहला हमें पूरा PowerPoint को माने देखि परिबा प्रेजेंटेशन को हम देखि परिबा ओके view then slide show next question to select all the boxes of an organization chart जतला हम सिलेक्ट करबा all the boxes of an organization chart ताहले कोन हबो क्लिक एडिट करि परिबा एंड सिलेक्ट ऑल भी परिबो राइट क्लिक द चार्ट बैकग्राउंड क्लिक सिलेक्ट ऑल भी करि परिबा प्रेस एंड होल्ड द शिफ्ट की को प्रेस करके क्लिक ईच बॉक्स रे मध्ये क्लिक करि परिबा ऑल ऑफ द अबव इज योर राइट आंसर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड व्हेन यू वांट टू ऐड अ स्लाइड टू एन एक्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन जतले गोटे प्रेजेंटेशन रे हमें ऑलरेडी गोटे प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करा देछि सेते दरकार पडला गोटे स्लाइड को हमें ऐड करबा माने गोटे पेज सिंपली बुझंतु गोटे पेज स्लाइड मींस पेज को ऐड करबा एटा गोटे स्लाइड जेमिति गोटे पेज जेमिति 148 नंबर लिखा देछि त हमें कोन करि परिबा इंसर्ट को जाई कि न्यू स्लाइड रे मध्ये क्लिक करि परिबा ऑप्शन अनुसार नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच की डिलीट्स टेक्स्ट बिफोर और द लेफ्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन पॉइंट ओके व्हिच की क्यों की साहाय्य में ना करि परिबा डिलीट की नो डिलीट की साहाय्य कोन हबो लेफ्ट तो डिलीट हबो ना जति बैकस्पेस की इज द एप्रोप्रिएट हिज ऑप्शन इज द राइट आंसर 150 माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट इज आज लास्ट क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट इज कोन गोटे प्रेजेंटेशन प्रोग्राम ऑप्शन सी इज द राइट आंसर द फॉलोइंग प्रोग्राम्स इज नॉट ए पॉपुलर डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम निम्नलिखित मध्यरु केउ प्रोग्राम टिए ओके गोटे डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम नुह which option is the right answer try करंतु Adobe पेज मेकर हे परिबो Microsoft पब्लिशर भी हे परिबो ओके वर्क एक्सप्रेस मते हे परिबो बट लोटस आमी प्रो हबो नाही ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रही ठीक अछि प्रत्येक क्वेश्चन को ट्राई करंतु which menu provides you options okay like animation scheme custom animation slide transition
केउ मेन्यू रे आमे पाइबा एनिमेशन स्कीम हो कस्टम एनिमेशन हो कि स्लाइड ट्रांजिशन हो एई सबुडा आमे केउ मेन्यू रे पाइबा इंसर्ट मेन्यू हबो फॉर्मेट मेन्यू हबो टूल्स मेन्यू हबो ना स्लाइड शो मेन्यू हबो जदि परीक्षा रे एमिति आसीबो आमे केमिति करिबा व्हिच ऑप्शन इज द राइट आंसर ट्राई करंतु स्लाइड शो मेन्यू हिजबो यार राइट आंसर क्लियर सबुडा पाइबा नेक्स्ट क्वेश्चन इन व्हिच मेन्यू यू कैन फाइंड few charts like slide design slide layout etc slide design and slide layout इत्यादि आमे केउ मेन्यू रे पाइबा ऑप्शन बी फॉर्मेट मेन्यू इज द राइट आंसर फॉर्मेट मेन्यू रे आमे एई सब गुडा को पाइबा नेक्स्ट क्वेश्चन 154 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉन्ट स्टाइल निम्नलिखित मध्यरु केउ गटिक फॉन्ट स्टाइल नुह बोल्ड तो ही परिबो गोटे फॉन्ट स्टाइल इटालिक मध्ये करि परिबा रेगुलर मध्ये ही परिबो बट सुपरस्क्रिप्ट इज नॉट ए फॉन्ट स्टाइल ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन 155 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ पेज मार्जिन निम्नलिखित मध्यरु केउटा गोटे पेज मार्जिन नुह ऑप्शन सी सेंटर इज द राइट आंसर ठीक अछि सेंटर गोटे पेज मार्जिन हबो नाही नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज ए पोर्शन ऑफ डॉक्यूमेंट इन व्हिच यू सेट certain पेज फॉर्मेटिंग ऑप्शन व्हाट इज द पोर्शन ऑफ डॉक्यूमेंट केउ पोर्शन रे एटा सेक्शन रे आसीबो ना ऑप्शन सी इज द राइट आंसर सेक्शन पोर्शन रे हमें किछि सेट करि परिबा certain पेज फॉर्मेट ऑप्शन को क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन बैकग्राउंड कलर और इफेक्ट्स अप्लाइड ऑन ए डॉक्यूमेंट इज नॉट विजिबल इन बैकग्राउंड कलर दिया जाइथिबो किमा कोनसी इफेक्ट दिया जाइथिबो कोनसी डॉक्यूमेंट रे ताहा केउ थारे विजिबल हबा नाही मींस देखा जिवो नाही प्रिंट प्रीव्यू रे देखा जिवो नाही ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ओके केउ थारे देखा जिवो नाही प्रिंट रो प्रीव्यू रे देखा जिवो नाही नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फाइंड एंड रिप्लेस इन एक्सेल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग निम्नलिखित मध्यरु केउटा गोटिए ट्रू नुह अबाउट फाइंड एंड रिप्लेस को नेकी ओके चारोटी ऑप्शन पढंतु भलो भाबरे देन व्हिच ऑप्शन इज द राइट आंसर ट्राई करिबा यू कैन सर्च फॉर बोल्ड एंड रिप्लेस विथ इटालिक ओके बोल्ड सर्च करिया इटालिक करि परिबा फाइंड एंड रिप्लेस रे यू कैन डिसाइड वेदर टू लुक फॉर द होल वर्ड और नॉट एटा भी परिबो यू कैन सर्च इन फार्मूला 2 ठीक अछि फार्मूला मध्ये हम सर्च करि परिबा यू कैन सर्च बाय रोज और कॉलम्स और शीट्स नुह एटा करि परिबा नाही दैट्स व्हाई इट इज नॉट कहिछि ना नॉट ट्रू ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द बेस्ट वे टू insert a new slide in a presentation is to use the ट्राई करंतु द बेस्ट वे सब गोटे बेस्ट वे जेतला हम गोटे न्यू स्लाइड इंसर्ट करिया प्रेजेंटेशन रे ताहाले ई जो ऑप्शन मध्यरु केउ व्यू रे हमें माने गोटे बेस्ट वे रे इंसर्ट करि परिबा स्लाइड शॉर्टर व्यू इज द राइट आंसर ठीक अछि बहुत कन्वीनियंट बिकॉज़ एथरे कोन होय ना जहां भी सब स्लाइड अछि सब जगह हमें शॉर्ट करि देखि परिबा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन्स यू कैन सेट फॉर ए ड्रॉप कैप रे गोटे ड्रॉप कैप रे मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन्स केते रहि परिबो आई थिंक 10 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन Which of the following line spacing is invalid निम्नलिखित मध्यरु केउ लाइन रो स्पेस इनवैलिड अटे ट्रिपल ठीक अछि ट्रिपल इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following are word processing software निम्नलिखित मध्यरु केउटा गोटे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओके देन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोन गोटे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जोथि हम किछि कैलकुलेशन करि परिबा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कोटा माइक्रोसॉफ्ट रो पावर पॉइंट नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following is not of the merge processor निम्नलिखित मध्यरु कोटा गोटे merge processor नुह sort the data source records is the right answer option a ही हबो यार राइट आंसर which of the following is the latest version of Microsoft Word okay जदि हम ऑप्शन मध्यरु देखिबा ताल 2010 होइछ यार राइट आंसर क्लियर बट नाउ डेज 365 मध्ये गोटे हमें यूज करछंती Microsoft ऑफिस रो एथि मध्ये वर्ड आसी जाउछ किबा 21 मध्ये होई परिबो लेटेस्ट वर्जन ओके 2021 नेक्स्ट 22 मध्ये खूब शीघ्र आसी जिवो इन Microsoft PowerPoint two kind of sound effects file that can be added to the presentation are प्रश्न होची माइक्रोसॉफ्ट रो पावर पॉइंट रे हम दुई प्रकार रो साउंड इफेक्ट को ऐड करि परिबा तो से दुई प्रकार रो साउंड इफेक्ट कोन कोन हि परिबो साउंड इफेक्ट ताहा डॉट वेब फाइल हि परिबो किमा मीड फाइल हि परिबो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन स्पेशल इफेक्ट यूज्ड टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन ए प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड कोनसी को स्लाइड रे जदि हम किछि भी इफेक्ट दबा ता हमरो माने सेटा कोन कहजो सेटा ट्रांजिशंस कहजो क्लियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ट्रांजिशन हो यार राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट द एंट्री इफेक्ट एज वन स्लाइड रिप्लेस अनदर इन ए शो इज कॉल्ड सेटा कोन कहजे जेतले पावर पॉइंट रे कोनसी भी इफेक्ट दिया जिवो वन स्लाइड को रिप्लेस करी अनदर ए जो शोटा को कोन कहजिवो सेटा कहजिवो कोन स्लाइड ट्रांजिशन कहजिवो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन टू ऐड ए हेडर और फुटर टू योर हैंडआउट यू कैन यूज कोनसी भी हैंडआउट रे जदि हम हेडर और फुटर को जदि हम यूज करबा ताले हम कोन करि परिबा वेरी सिंपल सेति हम कोन करियार अछि हैंडआउट मास्टर ऑप्शन को जिबार अछि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन in Microsoft PowerPoint in order to see all the slide on a one screen okay हम कहितली गोटिए स्क्रीन रे जहां भी सब स्लाइड अछि तो सेटा हम देखिया पहिले हमको कोन करबार अछि स्लाइड व्यू को जिबा पर कोन करबा स्लाइड शॉर्टर रे जाय हम क्लिक करबा ऑप्शन ए ही जो है राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following is the default page set of orientation plot slides in PowerPoint निम्नलिखित मध्यरु केउटा गोटे डिफॉल्ट थाय मींस जेतेला हम PowerPoint ओपन करंती तो सेही समय रे कोन होय डिफॉल्ट पेज सेटअप ता थाय सेटा कोन हबो लैंडस्केप रे ही थाय
ओके लैंडस्केप मीन्स ये जो पेज आकारटा जमी अच्छी सेमती ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन पेज मेकर इज ए डेस्क सॉफ्टवेयर पेज मेकरटा गोटे कौन हम पेज मेकरटा होची गोटे डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर डैश इज एट द टॉप ऑफ द विंडो एंड इट डिस्प्ले द नेम ऑफ द एप्लिकेशन माने गोटे विंडोर टॉप रे कोनटा थाए नेम ऑफ द एप्लिकेशन सेटा कोन हे परिबो टाइटल हे परिबो ना टाइटल बार को जाए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन डैश इज डिस्प्लेड बिलो द टाइटल बार तले जहाँ देखा जाए सेटा आमे कोन कहंती मेनू बार कहंती मन रखंतु लेआउट इज इन डैश बार लेआउट आमे क्यों बार रे पाइबा लेआउट आमे पाइबा दैट इज मेन्यू बार रे ही पाइबा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सेव ऑप्शन इज प्रेजेंटेड इन डैश बार सेव ऑप्शन को हमें क्यों बार रे प्रेजेंट करि परिबा सेव ऑप्शन को हमें टूल बार रे प्रेजेंट करि परिबा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ओके एडा सु प्रैक्टिकली कले तो भलसे बुझियो ठीक अछि मु ट्राई करबी पूरा माने हमरो एमसीक्यू सरबा पर पूरा वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट को गोटे वीडियो रे हमें जहाँ जहाँ सब इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करछंती सेटा प्रैक्टिकली हमें बुझिबा नेक्स्ट क्वेश्चन द टूल यूज्ड टू सिलेक्ट एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द पेज इज कॉल्ड एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द पेज इज कॉल्ड सेटा कोन कहजिबो सेटा पॉइंटर टूल कहजिबो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर डैश कंटेन्स ऑल द टूल्स नीड टू कंपोज ए पेज तो सेटा माने के सेटा को माने धारण करथाय एटा टूल बॉक्स धारण करथाय टूल बॉक्स ऑप्शन डी इज द राइट आंसर क्लिकिंग ऑन द डैश टूल चेंज द पॉइंटर टू एन इंटरसेक्शन पॉइंट फॉर टाइपिंग एंड हाइलाइटिंग टेक्स्ट आमे जेतले केउ टूल ऊपर क्लिक करबा तो हम पॉइंटरटा चेंज होबो तार टूल टेक्स्ट जेतले आमे क्लिक करबा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन डैश टूल रोटेट्स ए टेक्स्ट बॉक्स और इमेज टू ए डिजायर्ड एंगल सेटा कोन कहजिबो रोटेट टूल कहजिबो ना जेतले आमे रोटेट टूल रे क्लिक करबा त आमे गोटे टेक्स्ट को रोटेट करि परिबा डैश टूल इज यूज्ड टू रिड्यूस और कट इमेज एरिया कोनसी गोटे इमेज को रिड्यूस करबा बा हम किछि जिंस हटेबा सेंस रे क्रॉप टूल यूज करंती ऑप्शन व्हिच ऑप्शन इज द राइट आंसर क्रॉप टूल ऑप्शन डी हे जो है राइट आंसर फटाफट ट्राई करंतु डैश टूल इज यूज्ड टू ड्रॉ स्क्वायर कॉर्नर्ड बॉक्सेस कोनसी भी स्क्वायर कॉर्नर्ड बॉक्स करिया पे हमें बॉक्स टूल यूज करि परिबा ऑप्शन सी हे जो है राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द टूल यूज्ड टू मूव द एंटायर पेज ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड द टूल यूज्ड टू मूव द एंटायर पेज जो टूल हम यूज करंती स्क्रीन को मूव करिया पे एंटायर गोटे स्क्रीन रे थिबा एंटायर पेज को हैंड टूल हम यूज करंती ऑप्शन ए ही जो है राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन डैश टूल इज यूज्ड टू चेंज द मैग्निफिकेशन ऑफ द पेज व्यू मैग्निफिकेशन मींस जूम करिया में देखि परिबा दैट इज जूम टूल जूम करि परिबा और जूम को हमें माने जूम आउट करि परिबा किबा जूम इन भी करि परिबा नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करंतु 184 कलर्स palette is present in dash menu color palette is present in क्यों मेनू रे विंडो मेनू रे पाइबा नेक्स्ट क्वेश्चन द डिफॉल्ट ओरिएंटेशन इन पेज मेकर 7.0 इज सेटा कोन थाय सेटा हमर टॉल थाय ओके जो ओरिएंट सेंटर माने पेज मेकर रो पेज रो साइज ता कोन थिबो टॉल थिबो नेक्स्ट क्वेश्चन द स्टाइल इज ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन थ्रू द मिडल ऑफ ईच वर्ड इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन रे मिडल ऑफ द ईच वर्ड जेतला रहबो सेटा कोन कहजिबो स्ट्राइक थ्रू कहजिबो ना वर्टिकल लाइन रे स्ट्राइक थ्रू ही जो है राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन डैश इज द लाइन बिटवीन टू लाइन ऑफ टाइप डैश इज द लाइन बिटवीन टू लाइन ऑफ टाइप सेटा कोन कहजिबो लीडिंग ऑप्शन ए इज द राइट आंसर मन रखंतु एडजस्टिंग द स्पेस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कैरेक्टर इज कॉल्ड दुईटा कंसेक्यूटिव कैरेक्टर मध्य रे जरा में स्पेस को एडजस्ट करबा सेटा कहजिबो ट्रैकिंग कहजिबो कोन कहजिबो ट्रैकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन पैराग्राफ फॉर्मेटिंग ऑप्शंस आर प्रेजेंटेड इन डैश मेन्यू पैराग्राफ फॉर्मेटिंग ऑप्शंस आर प्रेजेंटेड इन डैश मेन्यू ऑप्शन डी टाइप मेन्यू रे पाइबा टाइप मेन्यू है जो है राइट आंसर डैश मूव द टेक्स्ट इनवर्ड फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट मार्जिन डैश माने इंडेंट जरिया हम करि परिबा ओके इंडेंट द्वारा कोन हबो सेटा मूव हबो राइट वर्ड एंड लेफ्ट मार्जिन आडू ऑप्शन इज द राइट आंसर व्हिच इज नॉट एन अलाइनमेंट ऑप्शन इन पेज मेकर निम्नलिखित मध्य कोटा गोटे अलाइनमेंट ऑप्शन नो पेज मेकर रो डी ही जो बॉटम टा गोटे अलाइनमेंट ऑप्शन नो नेक्स्ट क्वेश्चन कट ऑप्शन इज प्रेजेंट इन डैश मेन्यू कट ऑप्शन टा क्यों मेन्यू रे पाइबा एडिट मेन्यू रे ही पाइबा कट कॉपी पेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव पेजेस ऑप्शन इज यूज्ड इन डैश मेन्यू रिमूव पेजेस ऑप्शन इज यूज्ड इन लेआउट मेन्यू रे पाइबा नेक्स्ट क्वेश्चन डैश इज यूज्ड टू स्पेसिफाई बोथ कलर एंड टाइप ऑफ फिल एंड लाइन इन वन ऑपरेशन रे हमें कौन व्यवहार करंती फिल एंड स्ट्रोक को हमें व्यवहार करंती नेक्स्ट क्वेश्चन डैश मीन्स चेंजिंग फॉन्ट साइज निम्नलिखित मध्यरु स्केलिंग रो अर्थ होची कोनोसी भी फॉन्ट साइज को चेंज करबा ऑप्शन इज द राइट आंसर बुझियला ओके जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन 195 ऑप्शन से स्केलिंग द राइट आंसर डैश बटन inserted in slides will perform predefined action when you click the button एक्शन बटन वेरी सिंपल एक्शन बटन को हितो इंसर्ट करियो स्लाइड ऑलरेडी किछि सेट कराइथिबो क्लिक बटन ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन इन एक्सेल 2007 देयर आर डैश वर्कशीट इन ए वर्कबुक 2007 रे कोन रहितला ना सेतरे हमें गोटे वर्कबुक रे तीनोटी वर्कशीट पाउ क्लियर देन हमें क्रिएट भी करि परिबा नेक्स्ट क्वेश्चन डैश इज ए टेबल कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम्स निम्नलिखित मध्य कोठा हबो रो आउ कॉलम को नै कि वर्कशीट कंसिस्ट होई थाए ए वर्कशीट मध्य रे सेल थाए एंड ए जो वर्कशीट गुडा को नै गोटे वर्कबुक कहा जाय ओके रेंज टाउच जहां में सिलेक्ट करंती सिलेक्ट रेंज नेक्स्ट क्वेश्चन द न्यूमेरिक डाटा एंटर्ड इन द वर्कशीट इज डैश अलाइन्ड बाय डिफॉल्ट जहां भी हमर सेल भितर न्यूमेरिक डाटा हम एंटर करिया को हबो से को राइट रे रहइबो अलाइन हेकि रहइबो राइट अलाइन हेकि डिफॉल्ट रहइबो
नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन द इंसर्ट ए चार्ट टू एक्सेल क्लिक ऑन डेस्कटॉप वेरी सिंपल जेतेबेले गोटे चार्ट को आम इंसर्ट करबा एक्सेल रे ताहले आम कोन करि परिबा सही इंसर्ट टैब रे ही क्लिक करबा पुनी सारी चार्ट को जिबा चार्ट मेनू रे चार्ट रे क्लिक कर चार्ट इंसर्ट हबा जहाँ भी किसी डाटा दे परिबा ओके।